Hi, this is Dr. Tufail. I welcome you all in the class of Prosody. In our last classes, we talked about what is poetry and what are different figure of speech, and we also tried to discuss different meters and stanza pattern. In today's class, we will talk about ballad as a poetry, as a subjective poetry, and how it emerged as a genre in the subjective type of a poetry in English literature, and what is its origin, and what are the trends and the tastes and the writing ballad. So this will be the focus of the class, ballad, because initially when we categorize literature, we believe that literature could be classified with the help of this what we call. So this is how literature could be classified with the help of this thing. Okay, in today's class we will talk about what is the classification of literature in the poetry, definitions in the structure of ballad and types of ballad and history of ballad and some of the examples of ballad. So when we look at that literature is generally classified as a prose or poetry. And further, poetry is classified into narrative poetry, or it could be romantic poetry, or it could be lyric poetry. And the prose is qualified into fiction and non-fiction. That's general classification of literature as a prose and poetry. And when we proceed further, this narrative poetry, as we saw there, okay, there was one type of narrative poetry in which we narrate something, the stories, etc. They are classified into lays or epics and ballad. Okay, lays are also kind of a story type, um, sort of a poetry, a lay of lost ministers in which certain legends are certain pastoral type of stories were sung by the people, and they were famous in Scotland, other part of this Europe. And ballad is also one of the forms of poetry, ballad in which a short story in a poetry is called ballad. There's a story, always there's a story in a ballad, and the story that is of a national interest or something that's a grand theme or that's going to teach something. कोई ऐसी कहानी जिस कहानी के अंदर कोई सबक हो, कोई थीम हो, कोई मॉरल वैल्यूज हो, कोई जो है ना वो किसी लीडर्स की, किसी हीरोज की, किसी अच्छे काज की जो है ना वो बात करती हो, तो we call it a ballad. And you have studied different ballads in your previous studies. Look at that, King Bruce and the Spider, and Abbot of Canterbury is a ballad. Even somehow Abu bin Adim and the Miller of the Dee and Casabianca, that type of things were considered as a ballad in which the stories, certain stories, they were connected, they were uh, used in order to teach something to people, like Abbot of Canterbury, there's a message, or King Bruce and Spider, there's a message. This is how. And the third part of a poetry is epic, and epic basically is connected with the long narrative poem, okay, that consists of 12 books, etc., like this, okay. So, and lyric poetry is connected into sonnet and ode, okay. We will talk about sonnet and ode as well, okay, but they are subjective poetries, whereas this is objective poetry. Here, ballad and epic, we remain objective, whereas in lyrical poetry, we remain on subjective. And there is another form of this poetry, it's a subjective, what we call elegy, in which the song of death or song of a pensive mood or song of loss is sung. So that could also fall into the category of a subjective poetry. Subjective poetry can be ode or sonnet or elegy, whereas a narrative, this objective poetry would be ballad, epic, lays, romance, etc. So this literary epics and oral epics and primary epics, this is for the classifications of epic poetries. Okay, so look at the definitions of structures of ballad. Okay, the word ballet comes from the medieval French word ballare, which means the dance sign. Okay, it was based. Ballet is a type of narrative poetry. It tells a story in simple verse from form to be sung or recited. Okay, so be clear that ballad is to be sung
and it's a narrative poetry where this is a story, and the ballads tends to be narrative poems that tell stories as opposite to lyric poems. Now, see, also we use lyrical poetry to sing in a dance. But the basic difference between lyrical poetry, lyric poems, and narrative poems is that is the story. There is a story that goes there in the ballad, but in the lyrical poetry we don't need. Okay, so stories are short and dwells on the particular episode. Example, the Epic of Canterbury is a ballad. Simple language, some of the components which are very common whenever we use so far the language of ballad is concerned, it's always simple, and the poet always uses simple language, and they don't try to use a bombastic or complicated language, so it is beyond the understanding of a common man. Most often these ballads have been sung and used by common men as well, so their language used there was very simple. And the later poets, okay, especially in the romantic periods, they wrote the lyrical ballads, and this is was a combination. They call it lyrical ballad. I remember that lyric basically is subjective poetry, and ballad is objective poetry. But the romantic poets, because they were revolutionary, they didn't follow the rules and regulations established by new classics poets like John Dryden and Alexander Pope or that Dr. Johnson. So they parted their way with these new classicist writers. Then they used this technique, and their language is again simple. And they wrote a kind of a lyrical ballad where you find the combination of a lyric as well. And very famous, Lucy Gray is a very famous lyrical ballad in which a common girl sacrifice has been sung and celebrated or commemorated. So one thing is this language is just simple. Number two, ballad often has a refrain, a repeated section that divides segments of the story. So the story develops, but certain areas or certain verses or certain part which are repeated. But then again, many ballads have also implied incremental repetitions. Okay, the line is repeated, but again, this is repeated with certain additions. So that goes on and on. So that is another quality, that is this repetition and dialogue. Sometimes you will find that most often this ballad has a story, and the story has characters. So not often, but sometimes these characters they speak one another, and when they speak one another, then it becomes a kind of a dialogue. But remember that most often these dialogues are written in a third person pronoun, not a first person narrative or second person narrative. Most often in these ballads they use as a third person objective narration in which they just narrate the story. So yes, of course there are dialogues, but they are written from that perspective of a third person narrative. And ballads narrators usually don't speak in the first person unless they're speaking as a character in a story, and they often don't comment on their reactions to the emotional content of the ballad. So yes, they say if they are using first person, then there's the characters who are speaking, but then they would not comment on that thing. So you will find along with the simple language and the refrain or repetitions and dialogues. Opening ballad has an abrupt opening. You know that all of a sudden this is a story and it opens suddenly, and it doesn't have a kind of a logical development what we use in a short story, that you just start with simple introduction and exposition of the characters, and you sit to lay the foundation of your story so the reader could understand what is going to happen and the characters introduction, etc. But in that case, what you call as a formal story, in which you develop your opening or expositions logically. But most often these ballads they begin abruptly, and they don't uh, just lay the foundations, or that complete just formal introduction or expositions or development. We don't find that thing. So it's without providing any details about subject matters, and there is no extra details about the surrounding, and that story begins. So that's
quality that it is a simple language and it is a certain repetitions, it is a dialogue, it is opening. Now see, most often ballad stanza, the poet use different patterns, okay, and but most often they use quatrain. You know, quatrain consists of four lines. If they are four lines, we call it a quatrain. So the ballad stanza contain four lines. Okay, meters usually iambic, but it can they have a variation, but often they use iambic A B C B or sometimes A B A B. That could be rhyming scheme. Means the first line is going to rhyme with the third, and second is going to rhyme with the fourth. But sometimes the first A B C B. Mean the first line is first and the third line they are unrhymed, but the second and fourth lines they are rhymed, so it would be A B C B. Like I say, sun book bay took. So sun and bay they are not going to rhyme, but book and took they are going to rhyme. So this will be sun book ray took. So this would be A B C B, or it could be A B A B. If we say sun took, fun book. So sun fun book took. This would be A B A B. And lines one and three have a four beats, and line two and four have a three beats. Okay, so the writers they just reduce their lines length. It could be trimeters, it could be tetrameter. So if they are tetrameter, then there are 4 feet, and if there's a trimeter, then there are 3 feet and 6 syllables. So they just vary. I meet a lady in the meads, full beautiful, fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. Now, see here, you say that meets and child, then light and wild. See, first line and the third line, they are unrhymed, okay? And a child is going to rhyme with wild. So the first lines, they have 4 beats, okay? And the third line, second line has 3 beats. Again, the third line has 4 beats. Then again, the fourth line has 3 beats. So this is the third, second, and the fourth lines are rhymed, whereas the first and third lines are unrhymed. Meets and light, they don't rhyme, but child and while they do. So this would be the rhyming scheme of this is A B C B. That's the rhyming scheme. So this is how the traditional poets have used. Okay, and most of ballads they are written by unusually and anonymous, and they deal with the comedies and tragedies of everyday life. So they don't. They are most of ballads. They are not in the knowledge of people who has been writing that thing. Okay. So these this is the simple structure, and we have two type of ballads. Those they are type of means folk ballads, are traditional ballads, are oral ballads, are ancient ballads. Okay, they are based on stories, and these ballads developed by anonymous poets in the ancient times and handed down by mouth. It has no written form like a bit of Canterbury by an anonymous writer. That type of poets, they means ballads, they were written and they were not known who was the actual writer of that thing. And other literary or lyrical ballad, it's actually an imitation of traditional ballad. The only difference between the two is of the authorship. Okay, here literary ballads या lyrical ballads के जो writers हैं उनका हमें पता होता है ये बाद में उन जो oral ballads थी उन्हीं को copy करके या उन्हीं की नकल में लिखा गया है तो इनके हमें authorship का पता होता है कि ये किसके लिखी हुई है जबकि हमें जो लिरिकल बैलेट्स हैं या फोक बैलेट सॉरी जो हमारे फोक या ट्रेडिशनल या ओरल बैलेट है उसमें हमें authorship का पता नहीं रहता. Okay. So if you look at the history of English language, okay, though the England ballads were probably composed during the 500 years from period of 1200 to 1700, few of them were printed before the 18th century and some not until the 19th. अक्सर जो बैलेड ये 1200-1700 के दरमियान लिखे गए हैं इसमें कुछ जो है ना वो 18वीं सदी में पब्लिश हुए और कुछ तो 19वीं में जाकर चले. Ballad became popular during the romantic movements of poetry in the late 18th century. ये जो romanticism है जिसका फादर जो है ना वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उसके दौर के अंदर ये चीज़ मशहूर हुई और वो फिर
आगे चल के जो है ना वो डेवलप होकर इस जगह पर आई। तो ज़्यादा तौर पे जो बैलेड, जो लिरिकल बैलेड या लिटरेरी बैलेड की जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो रोमांटिसिज्म से। Thomas Percy published Relics of Ancient English Poetry in 1776 65। अब देखिए 18वीं सदी में इसने 1765 18वीं सदी में इसने ये किताब पब्लिश की है। और जब ये हीरोइक कपलेट का ये वो पीरियड था जब हीरोइक कपलेट का हेड है, मकसद देखें कि 1660 से जो है वो ड्राइडन का पीरियड शुरू होता है और यहाँ से हेरोइक कपलेट या न्यू क्लासिस जो राइटर्स हैं इनका होता है। उसके बाद ड्राइडन के बाद डॉक्टर जॉनसन है, जो है ना वो एलेक्जेंडर पोप आते हैं और एलेक्जेंडर पोप के बाद डॉक्टर जॉनसन आते हैं। और ये जो पीरियड 1660 से शुरू हुआ था ये जाकर 1832 पे ख़त्म होता है। और 1832 में फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का रोमांटिसिज्म का इनकलाब लाता है, जिसमें पहले जो रोमांटिक राइटर्स हैं जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज और लॉर्ड बायरन शामिल, जो अपना एस टी कॉलेज शामिल है। फिर हमारे पास जो दूसरी जो रोमांटिक ग्रुप में जो रोमांटिक पोएट आते हैं जिसमें जॉन कीट्स है और पिसी शेले है और लॉर्ड बायरन है। और उसके बाद फिर हम ट्रांजिशन पीरियड से होते हुए हम जो है ना वो चले जाते हैं विक्टोरियन पीरियड के अंदर। और फिर विक्टोरियन पीरियड के अंदर जो हमें राइटर्स मिलेंगे, शायर मिलेंगे, उनमें फिर अपना रॉबर्ट ब्राउनिंग और अपने लॉर्ड टेनिसन। तो वो फिर ट्रांजिशनल पीरियड पोइट्री का आएगा। लेकिन हीरोइक कपलेट ये न्यू क्लासिस्ट का दौर है जिसमें रूल्स रेगुलेशन बोम्बास्टिक लैंग्वेज और आइडियाज फ्रॉम सिटी लाइफ का जोर है। इसमें इमेजिनेशन को फरोग नहीं है, इसमें बोम्बास्टिक लैंग्वेज यूज हो रही है, इसमें रूल्स को जिसने नहीं फॉलो किया तो वो शायरी नहीं है। इस तरह का ये जो दौर है और हीरोइक कपलेट इनका फेवरेट जो है फॉर्म ऑफ पोइट्री है। तो इस दौर के अंदर ये चीज़ जब पब्लिश हुई तो प्रेसीज 3 स्मॉल वॉल्यूम्स इंक्लूडेड ओल्ड बैलेड्स एंड रोमांसेस। रोमांसेस भी इस तरह की कहानियाँ होती हैं जो लिखी जाती थी। और ये अभी हमारे यहाँ भी इस तरह की कहानियाँ होती हैं। फोक लोर जिसे हम कहते हैं कि चार दरवेश की कहानी या फिर ममताज दमसाज, लाइक दिस टाइप ऑफ नैरेटिव स्टोरीज। सो दे वर देयर एज वेल। ओके, मशहूर अरेबियन नाइट्स देखें, वो अरेबियन नाइट्स की जो कहानी है और वो रानी को हर रोज एक नई कहानी सुनाता है और 99 डेज वो कहानियां चलती हैं। So this is how they were romances were there, but here they included this ballads and romances from England and Scotland. Percy edited some of the ballads, which sometimes meant toning down their violent and sexual content, and he or his friends added poems of their own in imitations of the old ones. और फिर उनके साथ साथ इन्होंने अपनी भी शायरी उसमें ऐड की। और इस तरीके से that of the other antiquarian scholars sparked the ballad revival in Britain। और फिर यहाँ से फिर ये है कि बैलेड का एक रिवाइवल और ये चीज़ शुरू हुई। In 1815, 50 years after the publication of Relics, William Wordsworth attested to the importance of Percy's work to British Romanticism। और उसने फिर आगे जाकर खुद भी इस पे लिरिकल बैलेड लिखे थे। और जो इसने जो क्रिटिसिज्म की किताब विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश की थी जो कि रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो था, उसी के अंदर इसने यही चीज़ जो है ना वो नुमायाँ करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज पोइट्री, पोइटिक लैंग्वेज, डिक्शन and the process of a poetry, that is a powerful thought recollected in tranquility. What is imagination, what is addiction, what should be language, a rustic language, etc. ये सब चीज़ें जो है ना फिर इसने लिरिकल बैलेड जो अपनी किताब लिखी थी उस किताब में उन्होंने अपनी शायरी पब्लिश की थी। लेकिन उसके शुरू में जो प्रीफेस लिखा था वो जाहिर करता था कि उनकी पोइट्री बाकी पोइट्री से कैसे डिफरेंट है। So this is a simple definition. I mean, the history of that thing of this. Okay, saying that the poetry of his country has been absolutely redeemed by it. I don't think that there is an able righteous in verse of the present day who would not be proud to acknowledge his obligation to the relics. I know that it is so with my friends and for myself. I'm happy in this occasion to make a public avowal of my own. Okay, अब देखिए यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ इसको जो है वो इग्नोर का है जो ना वो सॉरी को एडमिट कर रहा है, इस पे इंडोर्स कर रहा है, इस पे एक्नॉलेज कर रहा है कि बैलेड की हमारी शायरी में क्या है। अब देखिए एक बात यहाँ पे आपको समझनी चाहिए कि बैलेड बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव पोइट्री है और रोमांटिक शायर जो है ना सब्जेक्टिव पोइट्री करते हैं। तो इन्होंने
जो बैलेड के अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी थी उसी को भी ख़त्म करके इन्होंने उसको सब्जेक्टिव बना दिया और सब्जेक्टिव तौर पे उन्होंने उसको पेश किया। आप देखें जो जब आप कैंटरबरी टेल्स या सॉरी एबट ऑफ कैंटरबरी या किंग ब्रूस एंड स्पाइडर पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट एक कहानी चलती है। लेकिन जब आप लिसी ग्रे को पढ़ते हैं तो आप उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लिरिकल बैलेड्स। आप देखें लिरिक रोमांटिक सब्जेक्टिव पोएट्री है और बैलेड ऑब्जेक्टिव पोएट्री है, लेकिन इनमें दोनों को मिलाकर लिरिकल पोएट्री है। So this is how there are three factors, okay, history of ballad. Okay, first they offered the way for poets to think of themselves as participating in a long history of British writing. Second, romantic era, जिसमें writers ने saw the ballad as expressing intense emotions in a language pure of later poetry, so bells and whistles. अब देखें ये राइटर्स जो यूज करें बैलेड को एज ए अपने इमोशंस को वेंटिलेट करने के लिए यूज करें, जबकि पहले जो यूज हुए थे उसमें सिर्फ एक स्टोरी को जो थर्ड द बैलेड्स पोर्ट्रेट द सेंसेशनल सब्जेक्ट मैटर्स sex, murder, adultery, infanticide, ghost stories, as you name it, in a way that it helps writers use that sensational matter, but still maintain some separation from it. लेकिन ये तमाम एरियाज जो है ना वो इसमें बैलेट्स में कवर हो सकते थे, हो रहे थे और राइटर्स यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें फिर एक किस्म की जो उसकी बैलेट की एक अपनी क्वालिटी है जो उसको बाकी शायरी से मुनफरद रखता है, इसका ज़रूर ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे बहुत से बैलेट्स मशहूर हैं, इस तरह फेमस है बैलेड एडेम्स ला बेला डेम्स सेंस मर्सी, कि मैंने एक वो देखी थी, जो एक वो शहजादी देखी जिसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, या लिंगटन्स रॉबिन्सन्स रिचर्ड खोरे और विलियम बटलर यस द फिडलर ऑफ द जर्नी, या विलियम वर्ड्सवर्थ की ल्यूसी ग्रे। तो ये वो हैं पोएम जो लेटर लिटरेरी बैलेड से ली गई हैं। और जहाँ तक फोक या ओरल या ट्रेडिशनल बैलेड की बात है, तो फिर हमने वो किंग ब्रूस और अपना एबट ऑफ कैंटरबरी का जिक्र किया था। अब ये जॉन कीट्स की ला बेला जेम्स सेंस मर्सी इसकी मशहूर जो है, जिसमें वो ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ए नाइट सुनाओ तुम्हें किस चीज़ ने बीमार रखा हुआ है, लोन एंड फेली लॉयटरिंग, तुम ऐसे जो ना वो तुम्हारा चेहरा पीला और जर्द है, तुम भटक रहे हो, द सेज हैज withered from the lake एंड नो बर्ड सिंग। ओके, यहाँ पे कोई भी जो है ना वो पौधे वगैरह नहीं है, और वो भी जो है ना वो इससे जो पौधे और झाड़ियाँ वगैरह हैं वो सब सूख चुकी हैं, और कोई बर्ड यहाँ पे गाता नहीं है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, मुझे बताओ ए नाइट तुम्हें किस चीज़ ने बीमार किया है, सो हैगर्ड एंड सो वी वो बिगान, तुम इतने जो है ना वो टूटे हुए हो, इतने परेशान हो, इतना तुम्हारा चेहरा जो है ना वो खौफ से भरा हुआ है। The squirrel's granary is full and the harvest is done। जबकि जो स्क्वायरल है उसने भी अपने जो है ना वो जो उसका घोंसला है या उस पे उसने अपने जो है ना वो अनाज को इकट्ठा किया है, और इस टाइम हार्वेस्ट भी अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी हुई है। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो, और उधर जो है ना वो फूल भी जो है ना वो खिले हुए हैं, विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, लेकिन तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये गुलाब का फूल जो मुरझा रहा है, फास्ट विद टू, जल्दी जल्दी मुरझा रहा है। आई में चले जी। अब वो ये पहला फेज था जिसमें वो नाइट से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें क्या, क्यों ऐसे जो है ना वो तुम बीमार, मायूस, उदास, परेशान और नीस्त नाबूद बनकर घूम रहे हो। अब वो कहता है कि आई मेट लेडी इन द मीट्स, ओके, मैंने इनसी मैदानों में एक लड़की मिली थी, फुल ब्यूटीफुल फेरी चाइल्ड, बहुत खूबसूरत थी, गोया कि परी की बेटी हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, उसके बाल लंबे थे, उसके जो न पाँव हल्के थे, एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उनकी आंखों के अंदर एक बहुत ज्यादा चमक थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके लिए फूलों के हार बनाए थे, एंड ब्रेसलेट टू, और हाथों के कंगन, कंगन के लिए कंगन कहें या आप उसको जो गजरे बनाए जाते हैं वो पहनाए, एंड फ्रेगरेंट जोन, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे कि वो मुझसे प्यार करती हो, एंड मेड स्वीट मोन एंड सेट हर ऑन माय फेसिंग स्टीड, और मेरे इस घोड़े के ऊपर बैठती थी, एंड नथिंग एल्स, सो ऑल डे लॉन्ग फॉर स्लाइट लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और पूरा दिन वो मेरे साथ बैठती थी, गाती थी, झूमती थी, और झुकती थी। तो वो पूरा दिन हमारा इस तरीके से गुजरता था। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ relish sweet and honey wild and manna too, and showed in language that she said I love thee too। वो मेरे साथ होती थी, हम
मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब, मेरी खुशियों हर में वो शामिल हो जाती थी और मुझे कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है। She took me to her elfin grove, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild, wild eyes with kisses for। वो मुझे वहाँ ले गई, वहाँ पे उसने वादा किया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैंने उन आँखों को पे बोसे देकर उनको बंद किया था। एंड डियर शी लल्ड मी asleep। वहाँ उसने मुझे कहा कि अब आप सो जाओ, मुझे सुलाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो भी टाइट। और जब वहीं मैंने ख्वाब देखा था कि जिस ख्वाब में मुझे लगा कि मैं खतरे में हूँ। एंड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, बस यही वो ख्वाब था जो मैंने देखा था। एंड ऑन द कोल्ड हिल साइड आई सॉ पेल किंग्स एंड princes to pale warriors, death pale were there, they all, they cried, La Bella Saints Mary। मैंने उस ख्वाब देखा था, उन ख्वाबों में मुझे बहुत से शहजादे, बहुत से जंगजू और बहुत से जनरल मिले थे जिन्होंने कहा था कि ये नाइट खबरदार हो जाओ, ला बेला डेम सेंस मर्सी, ये जो शहजादी है इसमें कोई रहम नहीं है। बी हैथ इन थ्रॉल, तुम खतरे में हो। आशा देयर स्टार लिप्स इन द ग्लोम, मैंने उनके देखे थे होंठ वगैरह, वो जो है ना वो मुरझाए हुए थे। विद हॉरिड वार्निंग गेट वाइट एंड एंड आई वोक अप एंड आई वोक अप एंड फाउंड मी हियर। और मैं जब वो जागा तो मैंने अपने आप को इधर देखा। On the cold hillside, and this is why I sojourn here, alone and palely loitering, though the sage is withered from the lake and no birds sing। सो दैट्स व्हाट। फिर मैं जागा तो मैंने देखा कि मैं यहाँ भटक रहा हूँ, उस दिन से आज तक मैं यहाँ भटक रहा हूँ। ये लेक जो न उजड़ चुकी है, कोई यहाँ पे परिंदा, कोई गीत नहीं गाता, और मैं उजड़ा उजड़ा उस शहजादी जिसके साथ मेरे चंद वो लम्हे गुजरे थे उसी को याद करके भटकता घूम रहा हूँ। सो दिस इज हाउ these ballads go ahead, okay, and this is what is a story of a ballad. Okay, so we are just going to end this class with, on this note. In the next class, we will talk about other genres of poetry, and we would try to analyze them. Thank you very much. Take good care of yours. Bye.